Hello, my dear students. Good morning, everyone. Okay, I hope you have all returned the AIT exam. So that AIT is a three. Okay, so we have already completed two AITs, and 2 days ago you have written the AIT three. So I hope everyone of you have done it very nicely. So this AIT of a month September. Okay, so from this paper we are going to discuss few of the questions which you might have felt difficult. ओके तो आपको डिफिकल्ट लगे होंगे इसको अंडरस्टैंड करने में। ऐसे कुछ क्वेश्चंस बेटा अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो इफ यू हैव एनी डाउट्स तो आप पूछ सकते हैं मुझे एंड आपके रेस्पेक्टिव टीचर को। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले विल स्टार्ट द डिस्कशन देन। Okay, so for those people who are looking me for the first time, my name is Gazala and I'm one of the biology faculty in Avanti Fellows. Okay, chalo. So without any further ado, we'll start. So there is a first question on the screen. In which kingdom would you classify archaea and the nitrogen fixing organism if the five kingdom classification of is used? Five kingdom system of classification is used. Okay, so options are plantae, fungi, protista, and monera. Very easy question, and this is one of the directly taken question from NCRT. Okay, so please answer me. So, as you're looking for this class, please make sure that, okay, whenever I'm showing you the question on the screen, you just guess the correct answer in your mind. Okay, so when we are going to discuss this further, कि आपके दिमाग में आपका आंसर हो बस, ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए. So please make sure that you pick any of the option. Okay, चलो. Yes, so I have given enough time now. So, as I have already told you, beta, we have studied this chapter of biological classification. Then we have come across the Whitaker's classification, which is a five kingdom classification. ठीक है, उसमें बेटा हमने बताया है nitrogen fixing organisms, that is cyanobacteria and blue green algae. Also the RK. So these belong to the sister five kingdom of classification में in the Monera. ठीक है, so Monera is the one where we are going to find the prokaryotes, and to be very specifically saying archaea and nitrogen fixing organisms come under this group of Monera. Okay, it's a very easy question. Okay, so there is a next question on the screen, that is match the column 1 with column 2. Okay, so column 1 has alioplast, RER, rough endoplasmic reticulum, lysosomes, and the Golgi apparatus. Okay, in the column 2 we have protein synthesis, lipid storage, digestion, glycoprotein formation. Okay, so these are the options and you have to choose the correct answer. I'm going to give you only 15 seconds. Within 50 seconds, you have to select your answer. ओके आपको अपना आंसर चूज करना है 15 सेकेंड्स के अंदर. जब हम डिस्कस करेंगे तो आपका आंसर जो आपने सेलेक्ट किया था वो करेक्ट होना चाहिए. ठीक है, अगर आपने एआईटी में करेक्ट किया होगा तो यहाँ पे भी करेक्ट होगा. अगर नहीं किया है करेक्ट या फिर आप छोड़ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि यू डोंट वांट टू गेट द -1, सो विल डिस्कस इट हियर. ओके, ओके, सो आई हैव गिवन इनफ टाइम. तो बेटा अब हम देखते हैं कि कौन से इसमें करेक्ट ऑप्शंस हैं. सो ए के लिए हम चूज करेंगे 2, क्योंकि बेटा एलियोप्लास्ट इज अ स्टोरेज सिस्टम ऑफ लिपिड. ठीक है, ये लिपिड का स्टोरेज सिस्टम है. एंड RER, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बेटा ये किस लिए काम आता है? फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. ओके, आपको पता होगा कि रफ एंड स्मूथ दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं. उसमें बेटा रफ इज द वन वेयर प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स. ठीक है, and the third one, lysosome. The lysosome has the hydrolytic enzymes. Those are helpful in the digestion. ठीक है, कोई हमारे बॉडी में सेल है अभी उसकी कोई नीड नहीं है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए बेटा दीज आर द स्ट्रक्चर्स दैट आर क्वाइट हेल्पफुल. ओके, दे हैव द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, वो डाइजेस्ट कर देंगे कोई भी अननेसेसरी पार्टिकल को.
ठीक है। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द गोल्गी apparatus. इट हैज द ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन, डेफिनेटली ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन कराएगा। ठीक है बेटा, आपने ऑलरेडी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ा होगा। ठीक है, तो RER से हमको जो प्रोटीन मिलता है, इसको ना पूरी तरीके से एक पैक बना के उसको एक लोकेशन देता है। ठीक है, कि कोई भी एक सब्सटेंस आया है, भी RER से प्रोटीन आया है, सो दैट प्रोटीन में ये यू नो जो होता है ना कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट, दैट इज ग्लाइको पार्ट, इट एड्स टू दैट। ओके, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। ओके, तो उसको ऐड करके फिर ये बन जाता है अभी ये ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन। नाउ इट हैज अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन टू गो, वहां पे जाके वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, सो गोल्गी apparatus के लिए ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन इज द परफेक्ट वन। ठीक है, अब हमने मैचिंग कर लिया, नाउ वी विल चेक हियर। सो A2, हाँ A2 वी हैव हियर। सो इन दोनों को हटा दो तुम। ओके, सो A2, B1, यस, C3। ओके, सो 3 इज द आंसर। सो 3 आंसर है, तो यहाँ यहाँ पे आपका ऑप्शन होना चाहिए C। ओके, C3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो बेटा यहाँ पे जो मैंने एलियोप्लास्ट लिखा है, तो इस तरीके से यू विल फाइंड द ल्यूकोप्लास्ट ऑल्सो। ठीक है, अल्यूरोप्लास्ट, वेयर द इन अल्यूरोप्लास्ट स्टोरेज कंपोनेंट इज अ प्रोटीन, सिमिलरली एलियोप्लास्ट में लिपिड स्टोरेज। आई होप यू ऑल हैव स्टडीड दैट। ओके, सो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। While dissecting an animal, a student observed that the animal possesses a bilateral symmetry and shows all three zones layer with a body cavity that lies a scattered pouch between ectodermal and endodermal tissue. So now you have to identify the phylum containing the animals exhibiting all the properties observed by the student. ठीक है, एक स्टूडेंट है, उसने डाइसेक्ट कर रहा है एक एनिमल, सो ही गॉट फ्यू ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। सो व्हाट ही ऑब्जर्व्ड अ एनिमल दैट पोजेस अ बाइलैटरल सिमेट्री। ओके, सो बाइलैटरल सिमेट्री होना चाहिए जिसमें लेफ्ट और राइट दो यू नो एरियाज होंगे। ठीक है, सो इन विच it also shows the three germinal layers or the germ layers with a body cavity that lies as a scattered pouch. ओके, सो यू आर अंडरस्टैंडिंग द स्कैटर्ड पाउच। ठीक है, अब स्कैटर्ड पाउच में है तो तुम समझ लो इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सूडोसीलोम। ओके, सूडोसीलोम, या तो सीलोम प्रेजेंट होता है, या तो सीलोम एब्सेंट होता है, या तो सूडोसीलोम। आप याद करो कि सूडोसीलोम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच फाइलम के ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, विद द इन बिटवीन एक्टोडर्मल एंड एंडोडर्मल टिश्यू। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू अ हिंट। ओके, मैंने आपको ऑलरेडी हिंट दे दिया है, नाउ यू हैव टू जस्ट चूज द आंसर। Okay, options are sponges, flatworms, comb jellies, and the roundworm. ओके, सो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि स्कैटर्ड पाउच में है कैविटी, दैट इज सूडोसीलोम। सूडोसीलोम एक ही फाइलम फाइलम में आता है। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू गिव यू ओनली 10 seconds नाउ। विद इन 10 seconds यू हैव टू टेल मी द आंसर। यस, वेरी गुड एवरीवन, एस्केलमिंथस। ठीक है, तो एस्केलमिंथस के एग्जांपल्स कौन से हैं? आप बताओगे राउंडवर्म, ओके, एस्कैरिस। सो एस्कैरिस इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ एस्केलमिंथस, एंड ओनली इन एस्केलमिंथस यू आर गोइंग टू फाइंड द स्कैटर्ड पाउच, एंड इट आल्सो हैज बाइलैटरल सिमेट्री। ओके, बाइलैटरल सिमेट्री होगा, इफ यू कट थ्रू वन प्लेन यू विल गेट द लेफ्ट पार्ट एंड द राइट पार्ट। ओके, जस्ट वी एज ह्यूमंस, तो हम भी बाइलैटरल सिमेट्री ही हैं। ठीक है, आप एक प्लेन में कट करोगे तो आपको एक लेफ्ट पार्ट मिलेगा, एक राइट पार्ट मिलेगा। ठीक है, तो दैट इज बाइलैटरल सिमेट्री। सो डी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। क्लियर? तो we'll move to the next question now. Okay, so 109, match the column 1 with column 2 and select the correct option from the codes given below. So these options are in the form of codes. तो आपको बेटा चूज करना है कि which column 1 code belong to the column 2 code. ठीक है, so column 1 has steel, endodermis, Casparian strip and bark. Column 2 has innermost layer of cortex, suberin, all the tissues exterior to vascular cambium, and all the tissues inner to endodermis. So, first I want to tell you that this question is from the chapter anatomy of the flowering plants. Okay, so whenever we study anatomy, we study the either it is a root or stem or anything or the structure of leaf. We'll study in a particular manner. We'll study from outward, जो outside के cells हैं उससे inside के cells में. The first it will be of a covering epidermis. पहले बाहर की तरफ epidermis रहेगा. Then there is a cortex region. In cortex we will find many types of cells.
And apart from cortex, to the inner words, there is an endodermis. Okay, inside endodermis, again, you will find the um, you know, pericycle and the vascular bundles. So inside, extremely inside, there will be a presence of pith. ठीक है, तो अभी आप मुझे बताइए, तो स्टील, एंडोडर्मिस एंड कैस्पेरियल स्ट्रिप एंड बक. ठीक है, सो टेक सम टाइम. यस, टेक सम टाइम एंड देन ट्राई टू आंसर. माय गॉड, व्हाट्स हैपनिंग. और रुको रुको, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है. ओके. अरे, इज माय लैपटॉप पोजेस्ड नाउ? ओके, चलो बेटा, अभी हम लोग देखते हैं. Okay. So first we will understand the steel. Okay. So steel क्या है बेटा? Steel is the area of the tissues that is inside to endodermis. ठीक है, endodermis के अंदर वाले पार्ट को हम steel कहते हैं. So I will choose A to S. ठीक है. Now endodermis. बेटा जो endodermis वाला पार्ट है, it is innermost layer of cortex. ठीक है, तो कॉर्टेक्स आप जब देखते हो कि, तो कॉर्टेक्स के इनर में आप जब जाओगे तो यू विल फाइंड द लेयर ऑफ एंडोडर्मिस. ठीक है. नाउ दिस कैस्पेरियन स्ट्रिप इज a strip found on the endodermis, but it is having the deposition of suberin. ठीक है, deposition of suberin होती है. And then bark is what? Bark is the tissue that is exterior to vascular cambium. ठीक है, वो exterior to vascular cambium होता है. So these are the matchings according to me. Now let's check one by one. A S, तो आप C and B को you can remove. तो A S B P B P. Okay, so A is the answer for this question. Okay, so A is the answer. Clear? Very easy question, not much difficult, but you have to know the concepts very well. Okay, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा, steel is a central core of the stem and the root of a vascular plant consisting of vascular tissues. What are the vascular tissues? Xylem for the transport of water and phloem for the transport of food, and associated supporting tissues. Okay, so endodermis is the innermost layer of the cells in the cortex, okay, which is surrounding the steel. Okay, cortex के अंदर, steel के बाहर, वो होता है एंडोडर्मिस. ठीक है. तो कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है बेटा, ये भी आपके वॉल्स ऑफ एंडोडर्मिस में होता है. इन एंडोडर्मल सेल्स में बेटा, कुछ सेल्स में डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन होता है. तो जिसमें सुबेरिन का डिपोजिशन हो, वी कॉल इट एज द कैस्पेरियन स्ट्रिप. Okay, and the bark is the outermost layer of the stem and roots of woody plants. Okay, so it's as simple as that. Now there is a next question on the screen. Statement 1 has the digestive system in platyhelminthes has only a single opening and serves as both mouth and anus. Statement 2, organ level of organization is exhibited by members of platyhelminthes. Okay, you have to choose the correct answer from the options given below. Very easy question again. So definitely beta, if you are very clear with the concepts of animal kingdom, you must be aware that कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है प्लैटीहेल्मिन्थस में, दैट इज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. इसका मतलब है इनके पास बेटा दोनों जो है ना, माउथ एंड एनस, ओके, दोनों एक ही चीज ओपनिंग से सर्व होती हैं. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी करेक्ट स्टेटमेंट. सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट स्टेटमेंट. ओके, so in platyhelminthes, the digestive system has a very single opening which serves as both mouth and anus. ठीक है. So statement 2 has organ level of organization is exhibited. This is also true. ठीक है, this is also true. So organ level of organization भी दिखने को मिलेगा and the one single opening. Hence you can choose here both the statements are correct. So D is the answer for this question. दोनों statements इसके correct statements हैं. Okay. चलो next question. So again statement question here 114. The frog excretes urea, thus is called a uricotelic animal. Fertilization of frog is internal and having larva stage. Okay, so you have to choose which is the correct answer. Okay, so frog excretes urea, thus is a uricotelic animal. Do you think it's a correct statement?
Okay. Then fertilization of frog is internal and having larva stage? Definitely not. बेटा fertilization of frog is external. जो frog का fertilization होता है वो external है. Hence this statement two is incorrect. And ये जो है ना बेटा frog excretes urea ये भी बिल्कुल गलत है. अगर यूरिया में होता तो भी यूरियोटेलिक होता, यूरिकोटेलिक नहीं होता. ठीक है. So यूरिकोटेलिक is found in the birds. ठीक है. यूरिया विल बी फाउंड इन अस एनिमल्स, मतलब जो हम मैमल्स हैं वो. ठीक है. तो फ्रॉग जो है वो अमोनोटेलिक में आएगा. सो दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है. सो हियर योर परफेक्ट आंसर इज बी. स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर इनकरेक्ट. नाउ हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स? कितने यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है दैट यू हैव टू चूज. ओके. यस. वेरी इजी क्वेश्चन अगेन, बट ऐसे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं. How many of the following are membrane bound organelles? Okay, so lysosome, ribosome, mitochondria, and then vacuole. Okay, so lysosome has a membrane, mitochondria has a membrane, vacuole has a membrane. Okay, but ribosome doesn't have. Hence, we can say three of the membrane bound organelles have the membrane. So your answer would be B. That is three. Ribosome doesn't have membrane. Okay. So coming to next question now. So epidermis in a dorsiventral leaf. Okay, so epidermis in a dorsiventral leaf. तो बेटा मैं सबसे पहले बता दूं आपको डॉर्सिवेंट्रल लीफ क्या है. सो डॉर्सिवेंट्रल लीफ इज फाउंड इन द डाइकॉट लीव्स. ठीक है. तो मोनोकॉट लीव्स को हम आइसो बाइलैटरल लीव्स कहते हैं. सो डॉर्सिवेंट्रल लीफ इज अ फाउंड इन अ डाइकॉट लीफ. ओके, इट्स अ हिंट. सो नाउ लेट्स सी द स्टेटमेंट्स. ए covers both adaxial and abaxial surface. Okay, is not covered by cuticle, bears more stomata on the upper side and may even lack stomata on the upper side. Okay. So which of the above statement are correct? Very easy question. You have to tell me among these statements which are the statements. Those are correct. बताइए. Okay. So I have given you enough time. Now let's see. As I have told you, this dorsiventral leaf is a leaf of a dicot, okay, plant. ठीक है. तो dicot leaf आप imagine करिए. So it covers both adaxial and abaxial surface. Definitely S. Okay. It has the adaxial and abaxial surface. That is correct. It is not covered by cuticle. No. Sometimes it is covered by cuticle. ठीक है. ये sometimes ये cover होता है cuticle से. इसीलिए मैं इसको wrong कर रही हूँ. ठीक है. Now see. Bears more stomata on the upper side? No, definitely not. It doesn't bear more stomata. It bears more stomata on the lower side, that is in the ventral side. ठीक है. तो इसीलिए यहाँ पे डी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है. मैं इवन लैक स्टोमेटा ऑन द अपर साइड. कभी कभार होता है, कभी कभार स्टोमेटा नहीं भी होता, बट जो नीचे की तरफ होता है वेंट्रल साइड में वहां पे स्टोमेटा विल बी मोर इन नंबर. ठीक है. तो यहाँ पे विथ द स्टेटमेंट ए एंड डी करेक्ट, योर आंसर वुड बी सी. Okay, so C would be the correct answer for this question. Okay, so we'll move to the next question now. So, following features belong to which option? Okay, cortex is made up of several layers of thin-walled parenchyma cell with intercellular space. Endodermis is made up of single layer of barrel-shaped cells without any intercellular spaces. Few layers of thick-walled parenchymatous cells form pericycle. Pith is small or inconspicuous. Fifth, conjunctive tissue is present 2 to 4 xylem and phloem in patches. ठीक है. So ये सारे features ना इन options के एक option में होने चाहिए. So now you take some time and try to get the answer correct. देखो, cortex is made up of several layers, but these are parenchyma cells with intercellular spaces. Endodermis is made up of barrel-shaped cells without intercellular space. Okay. Few layers of thick-walled parenchyma cells form pericycle. Okay. Pith might be small or inconspicuous.
कंजंक्टिव टिश्यू है, ओके, प्रेजेंट, बट 2 to 4 फ्लोएम और जाइलम इन पैचेस। तो ये जो फिफ्थ है ना, ये तुमको बताएगा कि इट्स टॉकिंग अबाउट रूट। ओके, क्यों? क्योंकि जो जाइलम एंड फ्लोएम पैच में होता है ना, दैट इज अ रेडियल टाइप ऑफ वैस्कुलर सिस्टम। ओके, रेडियल टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल होता है, तो स्टेम तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो स्टेम तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो रेडियल टाइप ऑफ वैस्कुलर सिस्टम है तो रूट में रहेगा। अब ये आपका काम है टू चूज वेदर इट्स अ डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट। क्लियर? if you remember if you remember, okay, dicot root has tetrarch condition, okay, exarch, tetrarch. So monocot root has polyarch condition, that is number of this phloem and xylem are many in number, hence we use in the monocot root as polyarch condition and same exarch condition। ठीक है, जो exarch है बेटा वो रूट में दिखती है, endarch condition will be found in stems। ठीक है, so with this you can say that it is the dicot root। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रूट हेयर है। यूजुअली जो रूट हेयर होता है वो यूनिसेलुलर होता है, ठीक है, एक सेल का होता है। and then it has a pyliferous layer। okay, pyliferous layer is nothing but epidermis। epidermis को हम कह सकते हैं। now this is a cortex made up of parenchyma cells and there is an endodermis। endodermis has passage cell, क्योंकि इसी passage cell से water will be transported to the xylem। ठीक है, जाइलम में ट्रांसपोर्ट होगा। अब ये फ्लोएम पैच है, ये जाइलम पैच है। सो जाइलम पैच में जो ये वाला पार्ट है, दिस इज प्रोटोजाइलम एंड द इनसाइड वन इज मेटाजाइलम। ठीक है, तो कभी भी मेटाजाइलम अंदर की तरफ हो और प्रोटोजाइलम पेरिफेरी की तरफ हो तो उसको हम कहते हैं एक्सार्क कंडीशन। ठीक है, तो these are the conjunctive tissue which is made up of parenchyma cells and these are Casparian strips with the subaril deposition। ठीक है, so this is a definite structure of dicot root। अब देखो dicot root में सिर्फ 2 to 4 xylem to phloem patches हैं, that means it is a tetrarch condition। ठीक है, so answer for this question is A। A is the answer। ठीक है, very easy question। Now let's see the next। Unicellular hair, endodermis has passage cell with the small and inconspicuous radial vascular bundle, exarch condition, 2 to 4 xylem and phloem। If you have understood what I just now said, then it is very easy for you to answer this question also। Okay, take some time। अरे मैं कोई हिंट विंट नहीं दूंगी क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी अच्छे से समझाया है। तो नाउ यू आई हैव टू आंसर दिस, इट्स योर कॉल। द अबाउट डिस्क्रिप्शन रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ओके, चलो, अगेन सेम डायग्राम। ओके, डाइकॉट रूट। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था जो हेयर है वो यूनिसेल्युलर हेयर है डेफिनेटली। एंडोडर्मिस विद पैसिव सेल इज प्रेजेंट, विथ बहुत छोटा है या इनकॉन्स्पिक्यूअस है। रेडियल vascular bundle I told you in the last slide। okay, so roots have radial type of vascular bundle, that means xylem and phloem are in different patches। okay, and xylem is exarch condition, I told you metaxylem is towards the center and protoxylem is towards the periphery, that is exarch। and very specifically if we are talking about monocot root, it will have polyarch condition, and if we are talking about dicot root, it will have the tetrarch condition। तो 2 to 4 है तो ये टेट्रार्क कंडीशन होगा, इसका आंसर अगेन डाइकॉट रूट ही है। देखो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा ना, तो एक ही पेपर में 2 सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं। ओके, सो डाइकॉट रूट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप इट इज अंडरस्टूड टू एवरीवन। ओके, चलो आई मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सो दिस क्वेश्चन इज 126। So select the option with correct labeling of given structure of Golgi apparatus। Okay, so you have to choose the correct option here with looking at the labelings। Okay, so I'll give you some time to this because you might need some time to think and remember। Take some time। Okay, yes, I have given you enough time। I hope you have the correct answer for this। Okay,
Done. All right. Chalo. So now let's see here. So it's the diagram of a Golgi apparatus. Okay, so Golgi apparatus का diagram है. So now you have to answer the labelings. ठीक है, तो अब यहाँ पे आप solution में देखिए कि क्या labelings हैं. ठीक है, so this is a cis space and this is a trans space. Okay, so here incoming transport vehicle, and here there is a newly formed vesicle. Okay, and this is a secretory vesicle, and these are the lumens, and these are the cisternae. Please know the difference between the cristae and cisternae. Cristae is present in mitochondria, but cisternae is a lumen-shaped structure, which is tubular-shaped structure, which is present in Golgi apparatus. Please don't ever get confused between cisternae and cristae. Cisternae, Golgi apparatus, cristae, mitochondria. ओके, तो अब यहाँ पे आप देखिए बेटा, विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेबलिंग. ठीक है, लेबलिंग अभी हमने देख ली, तो नाउ वी विल सी. ओके, सो ए सिस्टर ने करेक्ट. ओके, सो ए इज सिस्टर ने, दैट इज करेक्ट. ठीक है, तो ए सिस्टर ने है, ये बिल्कुल ठीक है. ठीक है, बी इज वेसिकल, डेफिनेटली दिस बी इज वेसिकल. Okay, B is vesicle. Okay, so now stands between the trans phase and cis phase. ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए this C is a trans phase, okay, and D is a cis phase. ठीक है, it's a cis phase, it's a trans phase, it's a cis phase. तो यहाँ पे आप देख लीजिए, it's a cis phase and the wider tubules have the trans phase. ठीक है, तो ये ट्रांस फेज है जहां पे वाइडर ट्यूब्यूल्स हैं, शॉर्टर ट्यूब्यूल्स हैव द सिस फेज. ठीक है, दिस आर वेसिकल्स एंड दीज आर ट्यूब्यूल्स ऑफ सिस्टर्ने. ठीक है, सो यहाँ पे आप देखोगे 3 and 4 आर डेफिनेटली रॉन्ग. तो 1 and 2 में आप देख के कंफ्यूज हो सकते हो, बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड. सी इज अ ट्रांस फेज एंड डी इज अ सिस फेज. ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, मतलब A1. ओके, चलो 1A क्लियर. सो ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप देर आर नो डाउट्स. कोई डाउट्स है इसमें? प्लीज टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट्स हियर. I don't think there are any doubts. Okay, chalo. So very easy. So if you see this diagram and understand, so it's a very easy to answer the diagrammatic questions. Okay, we'll move to next question now. Okay, so next question is match the column 1 with column 2 and select the correct options. Okay, so column 1 has agar, algine, carrageen, and chlorella spirulina. Column 2 has Gelidium gracilaria, brown algae, red algae, single cell protein used food supplements by space travelers. Okay, I think this question has been asked in AIET 2 also. I remember I have solved this question there also. Okay, see, some of the questions are getting repeated. That's why it is very important for you to perfectly understand all the AIT questions. Okay, AIT paper will give you a very good score if you do it with lots of practice. Okay, so you can take some time. Okay, and then try to answer the question. It's an easy one, not much difficult. All right. Chalo. So now we will see here agar. Agar is a it's a structure like jelly. Okay, it's used in jams and jelly. So this has been extracted from red algae, that is Gelidium and Gracilaria. ठीक है, तो अगार अगार के लिए ये फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है. ओके, इट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्पीशीज जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया. ठीक है, अब जो है algin. So algin is obtained from brown algae, carrageen is obtained from red algae. ठीक है, and chlorella and spirulina are the single cell protein which is used as a food supplement by the space traveler. Clear? तो इनका अभी ऑप्शन आप चूज करके देखिए यहाँ पे. तो ओके, सो ए इज द आंसर. Clear? Very simple. A1, B2, C3 and D4. Okay, so A is the answer for this question. Very easy question. Clear? Now we will move to the next question. 129. Read the given statements regarding prokaryotic membranous extensions and select the correct option. Okay, so statement 1 says motile bacteria have
thin filamentous extension from their cell wall called flagella. Statement 2 says pili and fimbriae are additional surface structures that play a role in motility. Okay, so you have to select the options now, okay, which is the correct statement and which is the incorrect statement. वेरी इजी. इजी मतलब अगर आपको पता हो तो कॉन्सेप्ट ठीक से, वरना फिर वो डिफिकल्ट हो जाता है. ठीक है. यस, टेल मी. I'm giving you some time to understand the question and try to answer the correct, choose the correct option. So here if you see, motile bacteria have thin filamentous extension from their cell wall called flagella. That is so true. Okay, beta, जो bacteria में आप देखोगे ना, you will find many extensions. So one is flagella, another one is pili, and another one is fimbriae. Okay, so flagella is help in the motility. Okay, motility में movement के लिए help करता है flagella. Pili helps in the reproduction of conjugation. Okay, bacteria has three types of reproduction. Okay, so transduction, transformation, and conjugation. So conjugation में जो pili है वो piliferous tube बनाता है. Okay, where there is a transform, the transfer of one of the plasmid स्ट्रक्चर. ठीक है, प्लास्मिड इज अ दैट इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर. ठीक है, तो जो कॉन्जुगेशन प्रोसेस होता है उसमें दो प्लास्मिड मेम्ब्रेन में क्या होता है बेटा, एक प्लास्मिड मेम्ब्रेन दूसरे बैक्टीरिया में शिफ्ट होता है. इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन द बैक्टीरिया. Okay, that is conjugation. So pili helps in the reproduction, whereas fimbriae is the one that helps in the attachment of bacteria to the substratum. Okay, bacteria को एक substratum में attach करने के लिए help करता है fimbriae. So as I have told you, there are three extensions which are originated from cell wall, but among them flagella is the one that shows motility. Okay, तो ये जो पिल्ला and fimbria है, इनके different structures and इनके different significant role है. So statement 2 is incorrect and statement 1 is correct statement. So based on this, C is the correct answer for this question. That is, statement 1 is correct and 2 is incorrect statement. Okay. चलो विल ओके, तो यहाँ पे आप देखिए, बिसाइड्स फ्लैजेला, पिल्लाई एंड फिम्ब्रिए और also the surface structure of the bacteria, they do not play role in the motility. I told you right, सिर्फ flagella ही motility में play करता है role, not pili and fimbriae. Clear? Now the pili are elongated tubular structure made up of special protein. I told you. Okay, the pillin is the protein name. Okay, that special protein. Okay, and they help in the reproduction in the method of conjugation. Fimbriae are the small bristle-like fibers which are sprouting out of the cell, and they help in the attachment of bacteria to the substratum. So as I have told you, this is the answer. So statement 1 जो है वो correct होगा, statement 2 is incorrect. Clear? Chalo, we'll now understand the next question, that is 132. Identify the components labeled as A, B, C, D in the given figure of cell membrane from the list 1 to 6. Okay. So here you have to choose the correct diagram with the correct component. And you have to choose the correct matching of their component, respective component. ठीक है, तो इसके लिए बेटा थोड़ा टाइम लगेगा. आई एम गोइंग टू गिव यू सम टाइम, सो टेक सम टाइम. आई विल गिव यू 30 seconds. Take some time, try to match the components and try to get the correct option. Okay, if you know your diagram very well, then it's very easy to answer this question. I think C and D would be very easy for you. Okay, but A, B में आपको शायद डाउट हो सकता है, but you take time. Okay, टाइम आप ले सकते हो, लेके आप करेक्ट आंसर चूज करके बताइए मुझे. Okay, चलो, I'll show you here. So
एज यू कैन सी दिस इज शुगर। ओके, तो ये जो है बेटा ये कार्बोहाइड्रेट है, इट्स अ शुगर, एंड दिस इज कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल है, एंड दिस इज द प्रोटीन, इट्स अ पेरिफेरल प्रोटीन। ओके, एंड दिस इज अ इंटेग्रल प्रोटीन, ये जो है इसको हम कहते हैं बेटा इंटेग्रल प्रोटीन। क्लियर? एंड दिस इज अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ओके, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, समझ में आ रहा है? Okay, so this is the phospholipid bilayer. Now, if you see the structure, A is sugar, okay, B is protein, lipid bilayer is this C, and D is integral protein. Okay, so now we have got your components with the correct matching. So based on this correct matching, you can choose your correct option. That is, A is the correct option for this question. Okay, so A is the correct answer. Clear? I told you there are two types of protein: external protein and the integral protein. Integral protein is inside the lipid bilayer. Okay, whereas the external is floating. Okay, floating over the lipid bilayer. Okay, so this is the correct answer for this question. That is 132 question. Now, which of the following statements correctly distinguishes 70S and 80S ribosomes? Okay, so the larger subunit is the same in both, smaller subunit is the same in both, larger subunit is different in both, and both types are present in amoeba. I know it's a difficult question. Good afternoon, Sakshi Kumari. I know you might find this question a bit difficult, but don't worry, we are going to solve this question. Okay. So if you know exactly कि 70s ribosome में कौन से subunits होते हैं, how many larger and which are the smaller, and in 80s ribosomes which are the larger and smaller subunits. ठीक है, so if you know that, then your answer can be very much easier. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सोल्यूशन देखेंगे बेटा. So 70s ribosomes is found only in prokaryotes, whereas 80s ribosome is found in both prokaryotes and eukaryotes. ठीक है, so 70s have 50s larger subunit and 30s smaller subunit, whereas 80s have 60s larger subunit and 40s smaller subunit. ठीक है, so that you need to know. तो अभी इस basis पे if you try to answer the question, okay, so as I have already told you, 80s will be present in both pro and eukaryote, 70s will be found only in prokaryotes. So these are the subunits. Okay, ये जो है बेटा, these are the subunits. Now if you see here, so you have to tell me which are the statements those are correct. Okay, so which of the following statements are correctly distinguishes 70s and 80s ribosome. Okay, तो यहाँ पे आप देखिए, यू हैव टू चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. ओके, तो yes, it's definitely subunit both or composed of two subunits. ठीक है, तो बेटा आप यहाँ पे देखिए, द लार्जेस्ट सबयूनिट इज द सेम इन बोथ, डेफिनेटली नॉट. ओके, लार्जेस्ट सबयूनिट बिल्कुल सेम नहीं है ना. तो यहाँ पे देखिए, तो लार्जेस्ट सब यूनिट एक में 50s है, एक में 60s है. आर दे सेम? नो, दे आर नॉट सेम. द स्मॉलेस्ट सब यूनिट इज सेम इन बोथ? नो, इवन स्मॉलर इज नॉट सेम. ओके, 70s में 30s है, 80s में 40s है. दे आर ऑल्सो नॉट सेम. So now let us understand the third statement. The largest subunit is different in both. Definitely. Largest subunit कितना है? Sorry. Largest subunit in 70s is 50s and 80s is 60s. So your statement 3 is a correct statement. क्यों? क्योंकि जो largest statement है, sorry, तो largest subunit जो है वो different है from the other. Okay, now both types are present in amoeba. ये आप बताइए. Both types are present in amoeba. Yes, they are present in amoeba. ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि दिस 70s एंड 80s राइबोसोम्स के बीच में बेटा, सो दिस आर बोथ फाउंड इन प्रोकैरियोट्स. ओके, 70s भी प्रोकैरियोट में मिलेगा, 80s भी प्रोकैरियोट में मिलेगा. और जो हमारा यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल लिया है अमीबा, अमीबा बिलोंग्स टू प्रोकैरियोट्स, हेंस इट बिलोंग्स टू बोथ. ओके, तो 70s में भी दिखेगा, 80s में भी दिखेगा. हेंस ऑप्शन C would be the correct answer. Why? Because statement 3 and 4 are correct statements, 1 and 2 are the incorrect statements. I hope you are clear with this concept now. ठीक है, तो 70s 80s राइबोसोम दोनों ही प्रोकैरियोट्स में दिखेंगे. अमीबा is an example of prokaryote. Why? Because amoeba doesn't have the
दिस वन, क्या कहते हैं उसको, very properly made nucleus. Okay, eukaryotes means what? True nucleus. U means true, karyo means nucleus, pro means primitive, karyo means nucleus. तो प्रोकैरियोट्स में प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है जिसका नाम है इंसिपिएंट न्यूक्लियस. समझ में आ रही है मेरी बात? सो सी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो आई होप इट इज क्लियर नाउ. विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay. Which of the following environmental conditions are essential for optimum growth of mucor on a piece of bread? Okay, so mucor is a type of fungi. It will be growing in a piece of bread. तो इसके लिए what kind of environmental conditions are optimum? मतलब optimum means these are the best conditions for growing mucor. Okay, so here we have given the statements: temperature of about 25 degrees Celsius, temperature of about 5 degrees Celsius, relative humidity about 5%, relative humidity about 95%, a shady place, a brightly illuminated place. तो इतने आपके पास स्टेटमेंट्स हैं. नाउ यू हैव टू चूज द आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. ठीक है, इजी क्वेश्चन बेटा. आपको देख के ऐसा लगेगा कि मैम ये क्यों इतना डिफिकल्ट है, बट इट्स इजी. थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बस. देखो बेटा, लेट मी टेल यू, फंगई ग्रो इन अ बिट ऑफ हायर टेम्परेचर ओनली. ठीक है, तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए ऑप्टिमम टेम्परेचर? दे माइट बी रेंजिंग फ्रॉम 24 to 30. 24 to 30 में बेटा फंगल इन्फेक्शन ज्यादा होता है. ठीक है, तो यहाँ पे इन्फेक्शन देखो, इफ यू ऑब्जर्व 25 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है ये बिल्कुल ऑप्टिमम टेम्परेचर है एक फंगई को ग्रो करने के लिए. ठीक है, बट 5 डिग्री सेल्सियस नो. कोल्डर टेम्परेचर में बेटा फंगल ग्रोथ नहीं होता. देखो मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ. यस इज डेफिनेटली साक्षी, यू आर करेक्ट. ओके, तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ बेटा. व्हाइल वी आर कीपिंग अवर ब्रेड इनसाइड फ्रिज. फ्रिज में क्यों रखते हैं हम लोग ब्रेड को? ओके, या फिर कोई भी फूड को, टू अवॉइड स्पॉइलेज वी आर पुटिंग इट इन अ फ्रिज. क्यों बेटा? फ्रिज में लोअर टेम्परेचर है. ठीक है, अगर बाहर रखोगे तो टेम्परेचर ज्यादा है, तो टेम्परेचर इनका ऑप्टिमम कितना रहेगा? 25 to 30. तो उसमें अच्छा ग्रोथ हो जाता है. लेकिन हमने फ्रिज में रखा तो टेम्परेचर ड्रॉप होगा, तो ग्रोथ ऑफ फंगाई विल बी रिस्ट्रिक्टेड. तो इसीलिए जो स्टेटमेंट 2 है वो इनकरेक्ट है एंड स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर के लिए 25 होगा. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी. इसके लिए ह्यूमिडिटी भी ज्यादा चाहिए बेटा. ठीक है, इफ यू सी जहां पे बारिश होती है ना, बारिश का सीजन होता है, या फिर ऐसे कंडीशंस में देखो आपके घरों में ना वो सीलिंग्स के ऊपर वो फंगल ग्रोथ हो जाता है. ठीक है, सीलिंग्स के ऊपर हो जाएगा, या फिर लोगों को भी जो फंगल इन्फेक्शन है वो बारिश के दिनों में ज्यादा होता है. क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है. तो फंगल को ग्रो करने के लिए इवन रिलेटिव ह्यूमिडिटी शुड बी ऑल्सो मोर. ओके, टेम्परेचर भी ऑप्टिमम कितना होना चाहिए? 25 to 30. रिलेटिव ह्यूमिडिटी शुड बी more. Okay, nearly 25, sorry, 95% is a good percentage. And it must have shady place. Definitely shady place होना चाहिए. क्यों? क्योंकि एकदम से bright light आएगा ना, तो that heat of the sunlight will disinfect. वो डिसइंफेक्ट कर देगा. इफ यू रिमेम्बर, आपने देखा होगा आपके जो पेरेंट्स हैं बेटा, अगर कोई चावल में या कोई भी धान में कीड़ा लग जाता है तो, ओके, कोई भी एक रागी है या कोई भी वीट है, राइस है, उसमें अगर कीड़ा लग जाता है तो उसको ना धूप में रखा जाता है. सन इज अ नेचुरल डिसइंफेक्टेंट. ओके, तो अभी आप ब्राइटली इल्यूमिनेटेड प्लेस में रखोगे तो फंगई ग्रोथ नहीं होगा. फंगई विल बी ग्रोन ऑन द शेडी प्लेसेस. ठीक है, तो इस म्यूकर को ग्रो करने के लिए यू हैव द 3 स्टेटमेंट्स विच आर following with the environmental conditions very perfect. Okay, that is 1, 4 and 5. So 1, 4 and 5 is the C option. Clear? Highly illuminated place is not best for growing fungi. Clear? So C is the option for this question, but I think you have understood. Temperature 25, optimum, relative humidity 95%, shady place होना चाहिए. Okay, तो यहाँ पे देखो मैंने कुछ आपको बताया है. Mucor is a filamentous fungi. Okay, so found in the humus of soil, decaying fruits and vegetables. It is commonly known as black mold. Okay, so most of the mucor species are unable to grow at 37 degrees Celsius. मतलब 37 तक वो ग्रो नहीं कर पाते. मतलब उसके लिए 25 to 30 डिग्री सेल्सियस इज ऑप्टिमम टेम्परेचर. Okay, and the strains isolated from human infections are usually one of the few thermotolerant mucor species. ठीक है,
चलो, तो colonies of mucor grow in a relative 25 to 30 degree temperature. I already told you that. Okay, humidity must be about 90 to 95 degrees Celsius. Sorry, not Celsius, 95%. Okay, so quickly cover the surface of the agar. ओके अगर ऐसी कंडीशन आप दोगे ना एक सरफेस प्लेट में, ओके इन ग्रोथ मीडिया, तो एकदम से ग्रोथ मीडिया आपका कवर हो जाएगा विद द फॉर्मेशन ऑफ फंगाई। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, टेम्परेचर ऑप्टिमम होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड मोनोअडल्फस, एपिअडल्फस, एपिफिलस एंड स्टैमिनोड। सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेराइल स्टेमन, अगर आपने पढ़ा होगा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स तो यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, सो व्हाट इज मोनोएडल्फस कंडीशन? ओके, तो यहाँ पे देखो बेटा, और ये क्या हो गया? मोनोएडल्फस इज द कंडीशन वेयर यू विल सी द बंडल ऑफ स्टेमन विल बी फ्यूज्ड टू सिंगल। ओके, जो स्टेमन होते हैं ना, तो सारे स्टेमन मिलके एक बंडल बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज मोनोअडल्फस कंडीशन। दिस यू विल सी इन द यू नो ऑर्गेनिज्म प्लांट। आप देखोगे बेटा हाइबिस्कस। ओके, हाइबिस्कस में आप जो देखोगे दैट इज मोनोअडल्फस। सारे स्टेमन ना एक बंडल बनाते हैं, दैट इज मोनोअडल्फस विच विल बी इजिली फाउंड इन हाइबिस्कस। Okay, then epipetalous. Okay, whenever you come across this word epi means please remember attached. Okay, petalous means petal, epi means attached. तो हमारा जो stamen है अगर वो petal को attached है, I'll repeat myself, if stamen is attached to petal we call that condition as epipetalous condition. Okay, now similarly phyllis, phyllis means बेटा tepal. Okay, tepal को कहते हैं phyllis. ओके, या फिर लीफ, यूजुअली फिल्ला इज यूज्ड फॉर अ लीफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हियर रेफर द स्टेमस दैट अराइज और इंसर्टेड ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो फिल्ला मीन्स लीफ, एपिफिलस। ओके, तो इफ द stamen, okay, stamen is attached or inserted on the surface of leaf, that is more commonly the petals and many other contexts, so rather than being attached to receptacle, usually receptacle में attach होना चाहिए but नहीं हो रहा, okay, leaf में attach हो रहा है, तो that would be called as epiphyllus। बेटा इसमें और एक वर्ड आता है epitepalous। ओके, एपिटेपलस एंड एपिफिलस बोथ कैन बी सेम। ठीक है, उसको बोथ को हम बेटा सेम कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि टेपल इज अ यूनिट। ओके, वो यूनिट है किसका? कैन एनीबॉडी टेल मी? पेरियांथ। ओके, सो पेरियांथ हमने बताया है, पेरियांथ में बेटा आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो केलिक्स को कोरोला के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जब लीफ कह रही हूँ तो केलिक्स और कोरोला इफ यू कांट डिफरेंशिएट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एपिटेपलस कंडीशन या फिर एपिफिलस। तो ये आप याद रखिए बेटा, एपिफिलस जब भी यूज होता है व्हेन वी सी द पेरियांथ। ओके, पेरियांथ कहाँ पे देखोगे? इन द मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स। ओके, लिली। ओके, तो आपके एनसीईआरटी में है बेटा लिलियेसी फैमिली, तो उसमें आप देखोगे एपिफिलस या फिर एपिटेपलस, बोथ आर सेम। नाउ स्टैमिनोड इज अ स्टेराइल स्टेमन। ठीक है, अब इससे आपको सिंपली क्या पता चला कि हाँ भाई स्टेराइल स्टेमन इज स्टैमिनोड। ठीक है, इजी क्वेश्चन, नो डाउट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Select the correct set of placentation in all four given below. Very good, Sakshi. ओके, तो आपको बताना है अभी, वेरी इजी अगेन, इफ यू रिमेम्बर द डायग्राम्स यू कैन इजिली सॉल्व दिस। ओके, ए बी सी डी। अच्छा मैं बता दूं? नहीं, आप बताइए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज प्लासेंटेशन, ये भी आपको पता होना चाहिए। Placenta is a cushion-like tissue present inside the ovary. Okay, ovary के अंदर present होता है. So ovule is attached to ovary with the help of this placenta. Okay, इस arrangement of ovary inside, arrangement of ovule inside a ovary is called as placentation. Simple भाषा में कहूँ तो ठीक है। अब A को बेटा हम एक्साइल कह सकते हैं, दिस इज अ एक्साइल टाइप ऑफ प्लासेंटेशन। B इज पेराइटल, C इज प्रीसेंट्रल एंड D इज बेसल। ठीक है, आपने देखो ए और बी तो बहुत कॉमनली देखा होगा। ओके, ए एंड बी तो आपने बहुत कॉमनली देखा होगा। ए एक्साइल यू माइट हैव सीन इन लेमन, लेमन। बी पेराइटल यू माइट हैव सीन इन क्यूक्यूम्बर। क्यूक्यूम्बर में आप देखोगे कि जो सीड्स हैं वो पेरिफेरल एरिया से निकलते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे ए वुड बी द आंसर फॉर दिस, ए एक्साइल, बी पेराइटल, सी फ्री सेंट्रल एंड डी बेसल। ओके, चलो, सो यहाँ पे मैंने लिखा है ए पेराइटल, बी ओके। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, find out the false statement from the following. You have to choose the false statement from the following. Okay, so calyx and corolla are reproductive organs of a flower. Zygomorphic flower can be divided into two equal radial halves in any radial plane. Flowers without bract are termed as bracteates. Parthenocarpic fruit is formed after fertilization of the ovary in legume seeds. It's in legume seed. It's non-endospermic. ओके, तो ये ईज होगा मेरे हिसाब से। इन लेग्यूम्स सीड इज, वो ऐसा आएगा, इन लेग्यूम्स सीड इज, आई थिंक। ओके, चलो, तो नाउ यू हैव टू आंसर मी। अगर कॉन्सेप्ट्स पता होंगे तो इजी होगा आंसर करना, अगर कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होंगे तो फिर वो डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, एंड यू हैव टू सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट्स। देखो, करेक्ट स्टेटमेंट्स नहीं चूज करना है, फॉल्स स्टेटमेंट्स, फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ लेट्स सी वन आफ्टर अनदर। ओके, सो calyx and corolla are reproductive organs of flower? No. Androecium and gynoecium are the reproductive units of the flower, whereas calyx and corolla are the non-essential or accessory whorls. So first statement is wrong statement. ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, लेकिन हमारे आंसर में करेक्ट आंसर देखेंगे हम लोग। देन, zygomorphic flower can be divided into two equal radial halves in any radial plane? No. टू इक्वल halves बना सकते हैं हम, बट नॉट इन एनी रेडियल प्लेन। नो, रेडियल प्लेन में नहीं कर सकते, बस एक प्लेन में करके यू कैन मेक द टू इक्वल halves, बट नॉट इन रेडियल प्लेन एंड नॉट रेडियल halves, डेफिनेटली नो। ओके, तो वो होता है एक्टिनोमॉर्फिक में। तो रेडियल प्लेन में जो हमको इक्वल पार्ट्स मिलते हैं, दैट हैपेंस इन रेडियल प्लेन। ओके, रेडियल फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक, बट नॉट इन zygomatic flower. सी, flowers with bracteates, सॉरी, विदाउट ब्रैक्टेट्स आर टर्म्ड एज ब्रैक्टिएट? नो बेटा, जो विथ ब्रैक्ट है उनको ब्रैक्टिएट्स कहते हैं। ओके, सो अगर ब्रैक्ट है फ्लावर में तो उसको ब्रैक्टिएट फ्लावर कहते हैं। ओके, विदाउट है तो उसको ब्रैक्टिएट नहीं कहते, डेफिनेटली नहीं कहते। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी? नो, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट इज अ रिजल्ट ऑफ नॉन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं होता। जो मदर है, जो फीमेल मदर सेल है, वही क्या करेगा, गैमीट बन के, गैमीट में बेटा मायोसिस होनी चाहिए, रिडक्शनल डिवीजन होना चाहिए, बट यहाँ पे होगा ही नहीं। ओके, वही जो चीज है, जो भी गैमेट बनी है, दैट गैमेट इज हैविंग द सेम क्रोमोसोम्स एज द मदर सेल एंड इट विल बी बिकमिंग एन इंडिविजुअल। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ही नहीं होता, मेल गैमेट यहाँ पे फ्यूज नहीं होता। सो दैट इज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, तो फर्टिलाइजेशन बिल्कुल नहीं होता। ओके, सो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट इज अ रिजल्ट ऑफ नो फर्टिलाइजेशन। क्लियर? तो सारे ही स्टेटमेंट गलत लग रहे हैं। चलो, लास्ट वन वी विल सी। इन लेग्यूम सीड इट इज मोनो, सॉरी, नॉन एंडोस्पर्मिक, दैट इज ट्रू। ओके, जो लेग्यूम सीड्स हैं बेटा, दीज आर नॉन एंडोस्पर्मिक, दैट इज करेक्ट। सो एक ही स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी। ओके, रॉन्ग स्टेटमेंट्स कितने हैं? ए बी सी डी आर द रॉन्ग स्टेटमेंट्स। वेरी गुड साक्षी, योर आंसर इज करेक्ट। ओके, सो तो यहाँ पे हमने देख लिए हैं, विल मूव अहेड नाउ। द फॉल्स स्टेटमेंट्स आर ए बी सी। ये क्या लिखा है भाई? नो नो, ये कुछ यहाँ पे गलत लिखा है, इसको मैं नहीं, देखो, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, देखो, ए फॉल्स है, ए स्टेटमेंट, बी स्टेटमेंट भी फॉल्स है, सी स्टेटमेंट भी फॉल्स है, डी स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ई जो है वो एक करेक्ट है, बट ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो यहाँ पे आपको चूज करना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। माइकोप्लाज्मा हैज नो सेल वॉल, ये ओके। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। Mycoplasma cannot survive without oxygen. Mycoplasma are pathogenic in animals and plants. Easy question again. Okay. So, which are the correct statements? Can you tell me, Sakshi?
Okay, let me see if I have solution here. Yes. देखो, mycoplasma has no cell wall. Definitely correct, beta. Mycoplasma is famous for not having cell wall. This is a correct statement. Okay. Mycoplasma is the smallest living organism. Definitely correct. Mycoplasma is the smallest. Even ये जो है ना, ये virus से भी smallest आप कह सकते हो. Okay. Then mycoplasma cannot survive without oxygen. No. दीज आर स्पेशलाइज टू सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. तो जो ये सी वाला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. ठीक है. माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. डेफिनेटली बेटा, दोनों में ही ये पैथोजेनिक है. यूजुअली मोस्ट ऑफ द माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेंस. ठीक है. तो यहाँ पे जो ए बी डी है वो करेक्ट है एक्सेप्ट सी. सी एक ही है, वो इनकरेक्ट है. तो योर आंसर कैन बी सी. ऑल आर करेक्ट स्टेटमेंट्स एक्सेप्ट सी. All are correct except C, because C is the wrong statement. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉलोइंग फीचर्स बिलोंग टू विच फाइलम. ठीक है. जो फॉलोइंग फीचर्स है वो कौन सी फाइलम को बिलोंग करेगा. एक्सक्लूसिवली मेराइन. ये सिर्फ ये फर्स्ट स्टेटमेंट से ही तुम आंसर बता सकते हो. ठीक है. रेडियल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक एंड टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन. बताइए. एक्सक्लूसिवली मेराइन. You have to tell me. Very easy question. Okay, Sakshi Kumari has already answered. Very good. Very good. Very good. What about others? What about others? Okay. So, very good, everyone. As you have already seen here, कि Tenophora is the correct option. क्यों? क्योंकि एक्सक्लूसिवली मेराइन है, रेडियल सिमेट्री भी है, डिप्लोब्लास्टिक भी है एंड टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन. सो टीनोफोरा इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है. सो मेंबर्स ऑफ फाइलम टीनोफोर दैट आर आल्सो कॉल्ड एज कूम बेरर्स एंड द कूम जेलीज. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. So, given below is a diagram of the stomatal apparatus. In which of the following are the four parts labeled as A, B, C, D that are correctly identified? ठीक है. बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा. इसके लिए मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगी. ठीक है. इसके लिए मैं ज्यादा टाइम नहीं देने वाली. मैं एक एक करके लेबल करती जाऊंगी, आप भी मेरे साथ कीजिए. ए इज अ एपिडर्मल सेल. ठीक है. बी इज अ सब्सिडियरी सेल. सी इज अपर्चर पोल, जो सेंट्रल अपर्चर होता है, या फिर इसको स्टोमेटल अपर्चर भी कह सकते हैं. सी को स्टोमेटल अपर्चर भी कह सकते हैं. डी इज अ गार्ड सेल विच इज रेनिफॉर्म शेप्ड गार्ड सेल. ओके. तो अभी आप ऑप्शंस देखिए. ए इज एपिडर्मल. ए सब्सिडियरी नो. गार्ड सेल नो. ओके. ए एपिडर्मल. ओके. एपिडर्मल एपिडर्मल. ओके. बी सब्सिडियरी सेल. सी को रॉन्ग कर दो. ओके. ए इज एपिडर्मल सेल, बी सब्सिडियरी सेल, सी इज स्टोमेटल अपर्चर, ये जो अंदर की तरफ है दिस इज स्टोमेटल अपर्चर, एंड दिस डी इज अ गार्ड सेल विच इज अ शेप ऑफ किडनी रेनिफॉर्म. ठीक है. तो डी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. वेरी इजी क्वेश्चन. ठीक है. चलो. सो डी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ 175. Deuteromycetes is commonly referred to as imperfect fungi. The mycelium is septate and branched. Okay. तो choose one of the correct alternatives given below. So बेटा इजी है ये भी क्वेश्चन, इतना डिफिकल्ट नहीं है. ओके. सो डिटेरोमाइसिट्स आर कॉमनली रेफर्ड टू एज इम्परफेक्ट फंगाई. ये तो इजी है, सबको पता है. ओके. डिटेरोमाइसिट्स आर एक्चुअली रेफर्ड टू एज इम्परफेक्ट फंगाई. बट सेकंड स्टेटमेंट रीजन जो है ये मुझे बताइए आप. रीजन. Mycelium is septate and branched. Yes, some of the mycelium is septate and some is aseptate also. देखो बेटा mycelia क्या होता है. Mycelium is a network of hyphae. मैम hyphae क्या है बेटा. देखो ये ऐसे करके होता है. ओके. इसमें यहाँ पे अगर न्यूक्लियस के सराउंडिंग में अगर सेप्टा आ रहा है तो इसी को हम सेप्टेट कहते हैं. एक दूसरा टाइप का हाइफे होता है जिसको हम सीनोसाइटिक कहते हैं. इसमें सेप्टा नहीं होता, सिर्फ ऐसे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. इसको हम एसेप्टेट भी कहेंगे या फिर सीनोसिटिक कहेंगे, एंड दिस लोअर वन इज सेप्टेट. ठीक है. तो माइसीलिया यूजुअली सेप्टेट होता है एंड ब्रांच्ड भी होता है. ब्रांच्ड इसीलिए क्योंकि नेटवर्क बनाना है ना पूरा एक. तो दिस इज ऑल्सो ट्रू.
ठीक है, तो ए स्टेट assertion इज करेक्ट स्टेटमेंट, रीजन इज ऑल्सो करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिए, तुमको समझ में आएगा। डिट्रोमाइसिट्स इज कॉमनली रेफर्ड टू एज इम्परफेक्ट फंगाई, करेक्ट। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, हाँ अभी देखो, माइसीलियम इज सेपरेट एंड ब्रांच्ड, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, लेकिन जो यस करेक्ट, साक्षी यू आर करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे देखो बेटा, assertion एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, बट द रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, इसीलिए इसका आंसर होगा बी। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। ठीक है, क्यों इम्परफेक्ट फंगाई है बेटा डिटेरोमाइसिट्स? डिटेरोमाइसिट्स इम्परफेक्ट फंगाई इसलिए है बिकॉज वी डू नॉट नो देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेज। ओके, कुछ हमारे पास जो फंगाई है उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको नहीं पता, इसीलिए हमने उनको इम्परफेक्ट फंगाई में डाला है, नॉट बिकॉज इट्स माइसीलिया इज सेपरेट एंड ब्रांच्ड। ठीक है, चलो, सो अभी हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करके मीटिंग खत्म करने वाले हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, वी हैव टोटली सॉल्व 25 क्वेश्चंस। ओके, दैट्स अ टारगेट एक्चुअली। So assertion में in some leguminous plants the leaf base is swollen. Reason the swollen leaf base is pulvinous. ठीक है, तो please try to answer this question. बताइए। Okay, so I'm going to show you the solution here. Both assertion and reason are correct, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्यों? देखो बेटा, जो लीफ बेस इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द लीफ बाय विच द लीफ इज ज्वाइंट टू द नोड ऑफ द स्टेम। डेफिनेटली इफ वी आर कंसिडरिंग दिस एज अ स्टेम, देर इज अ नोड, तो नोड से क्या आएगा बेटा? देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ लीफ, दिस इज ट्रू। ओके, इट प्रोटेक्ट्स द यंग एक्सिलरी बड, यस इट डज। ठीक है, तो अब लीफ बेस बिकम्स swollen ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ शुगर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और सम लेग्यूम्स में बेटा ये swollen होता है, दिस swollen leaf base is called as pulvinous, even this is also correct, but it is not a correct reason, is not a correct explanation of assertion। ठीक है, similar to the last question which we solved, assertion भी ठीक है, reason भी ठीक है, but reason is not the correct explanation of assertion, इसीलिए B is the correct answer। okay, any so these are the questions that we have solved beta, if you have any doubts you can ask me, or we can leave the meet। ठीक है, thank you so much, we have solved 25 questions। Thank you so much for attending the Q&A discussion session। Okay, thank you, Sakshi। Bye everyone, bye bye।